ग्रुप 1 में जो नेक्स्ट साउंड है वो है इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बॉय की बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया और बर्थडे प्रेजेंट्स को खोल के इन सब ने खूब एंजॉय किया। फाइनली उसने केक कट करना था। केक के ऊपर मैजिक कैंडल्स लगी हुई जो बार बार जल जाती थी। वो उसे पफ आउट करने की कोशिश करता था मगर वो बार बार जलने लगती थी। सब फ्रेंड्स ने मिल के पफ आउट करना उसको स्टार्ट किया। और इसकी पोइम कुछ ऐसे है, puff out the candles on the pink pink cake, puff out the candles on the pink pink cake, puff. स्टोरी ऑफ पोइम और के एक्शन के बाद अब हम करते हैं इसकी वर्कशीट। तो एक्टिविटी नंबर 1 है, कैन यू कलर इन द पैरट। दी पैरट साउंड इसमें भी आ रही है। एक्टिविटी नंबर 2, कैन यू से hit a hat, tap, tap, tap or app, tap. 3 of these pictures have a p sound in them. Toss out the one that does not. Panda. So it has p sound. Pie. P sound. Quill. में नहीं है p sound. Pen में भी आ रही है p sound. And then you can move forward towards the writing. See? Just few sounds करने के बाद your kid will be able to read some 3-letter words, and he also will be able to write these words, and their vocabulary will be enhanced with these kind of activities.